अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस खिलजी और आप देख रहे हैं व्हाट कम नेक्स्ट। तो स्टार्ट वेलकम टू व्हाट कम नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के हवाले से मटेरियल और लेक्चर मिलते रहेंगे। टू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फौरन से मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर और जहांगीर बल्टाइन के कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। Who appointed as China's new Prime Minister? Right answer is Li Qiang. China Parliament backs Xi Jinping for third term as president on. Right answer is 10 मार्च 2023. When was the last time Xi Jinping visited Pakistan? 20 से 21 अप्रैल 2015 में। Which country introduced the illegal migration bill? Right answer is United Kingdom. Which country has celebrated Flag Day for the first time in its history? Right answer is Saudi Arabia. Pakistan has decided to import 100 MW megawatt of electricity from. Right answer is Iran. Name the US congressman who has raised concern over the continuous violation of human rights and democracy in Pakistan. Right answer is Brad Sherman. Who was the first Pakistani female Google machine learning expert? Right answer is Aqsa Kausar. The world's first 3D printed rocket is scheduled to blast off from. Right answer is Florida. The United Kingdom signed the Windsor framework with which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने किंगडम ने विंडसोर फ्रेमवर्क साइन किया है? राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन. In which country Silicon Valley Bank collapsed in March 2023? Right answer is USA. Who scored fastest century of PSL history? Right answer is Usman Khan. Which team scored 263 runs? The highest team total in PSL history. Right answer is Multan Sultan. Which team has lowest scored 59 runs in PSL history? Right answer is Lahore Qalandars. अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा. And if you have any query related to this video, don't shy to comment below. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं. शुक्रिया.